information, name and balance. So first of all, we will form the template and then we will start with the program. Okay. I want Shubham 237. Are you there? Yes. Yes, Shubham. So you help me here. So the problem statement, you know that this is the problem statement. Let's start with the first. We need a class named as full Shubham. सर पहले हेडर फाइल्स लेंगे ना सर. हम्म? नाही नाही आपण काय करतोय आपण आता सध्या टेम्पलेट वी आर फॉर्मिंग अ टेम्पलेट जस्ट अ स्ट्रक्चर लेटर ऑन यू विल राईट अ कम्प्लीट सर सुडो कोड म्हणजे का? हा काइंड ऑफ सुडो कोड ठीक आहे सो क्लास शुभम तो तर नाहीये वाटतं. बरं यश आहे का 245 Yes, sir. Yes, sir. ओके सो हेल्प मी हियर सो क्लास नेम So, bank. ओके और वी विल से बैंक अकाउंट Yes. ठीक है ओके सो देयर आर फ्यू मेंबर वेरिएबल्स नेम अकाउंट नंबर withdrawal amount and balance. Yes, sir. So I'll list it here. Name, account number, yes, next is withdrawal amount. Then we have balance. पुढे यश is that the Sir, number mo- variables? हाँ. Initialize. Initialize. So to assign initial values, what do you mean by this? To assign initial values? Sir, मतलब initial function to initialize data members. क्यों? Is it necessary to initialize values? Yes, some. Why? Why do you think so? कि सर हमें initialize करना ही चाहिए, initial value assign करनी चाहिए. ठीक है. सर फिर चेक करने के लिए बाद में और फिर डिस्प्ले करने के लिए. Okay, ठीक है. Anyone else? Why do we need this function to assign initial values? सर No, इनिशियलाइज sir, नहीं किया तो I- फिर वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा. Yes, because initially, whenever we create, suppose I have created a object one, say account one. Okay, so this object consists of name, then account number, withdrawal amount, balance. Now, when I don't initialize anything to this, okay, so it contains some garbage value. That means name will have some garbage value, say AB, account number can be garbage value, withdrawal amount, garbage value, balance, garbage value. But whenever you says, if you display this directly, एक जो भी ये देख रहा है ठीक है इंफॉर्मेशन जो भी ये देखेगा whenever you display this first time it will display name as AB, account number as this, withdrawal amount as this and balance as this. So one may assume that ऐसे भी हो सकता है ना garbage value कुछ भी हो सकता है. So if this is the garbage value then one may get this assumption that we have account with name this, account number with this, and this person is having balance this much. So to avoid this,
इनिशियली जब हमने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, नील, अकाउंट नंबर 0, अमाउंट 0, बैलेंस 0, एवरीथिंग शुड बी 0, otherwise there may be a confusion. Say roll number percentage. Suppose if I am creating one object with roll number and percentage, object 1, तो रोल नंबर की गार्बेज वैल्यू हो सकती है ना, यस सर. सो इट कैन बी दिस, परसेंटेज गार्बेज वैल्यू ये भी हो सकती है. तो जब मैं ये डिस्प्ले करूंगा तो वन में गेट दिस कि ओके रोल नंबर 14 गेट 86%. तो ऐसे किसी को भी ये समझ में आ सकता है कि ये इंफॉर्मेशन है और वो ये भी एज्यूम कर सकता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू. ठीक है, जस्ट अ मिनट. Sorry. So we were here. ठीक है. Are you getting this? That's why we need to initialize values so that we will come to know that we don't have any values in this object. For that purpose, we need to assign initial values. और initial values assign करने का काम कौन करता है? Constructor. Constructor, right? So here, and how many types of constructors are there? डिफॉल्ट पॅरामीटराइज 3 टाइप्स. Three types. Okay, so what we will do is we will try to write all these 3 constructors in this single program. ठीक है, तीनों की तीनों constructor लिखते हैं, and so that we can use all these 3 constructors, we will create 3 different objects also. So I'll write here constructor 1, लिहायची गरज नाही. ओके हां. constructor 2, constructor 3. ठीक है, all 3 types of constructors to assign initial values. एक चल जाएगा, लेकिन in order to practice this, we will write all 3 constructors. दोनशे 70 इकडे कसं काय? ठीक है. So next is to deposit an amount. So for that we will write a function deposit amount, later on withdraw amount,
and last is display information. This will be our structure, right? Any doubt in this? कोई ऐसा है कि जिसे समझ में नहीं आ रहा है? Okay, how many of you got this? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. Those who have doubt, just say that no, sir, in chat box, and I'll explain them. Till that, all of you start typing this program, and once you are completed, first of all show me, then you submit here. Okay? Directly submit mat karo. You share your screen. Let me see. We all go through that program, and then you submit it. Okay? Is it okay? Yes, sir. Okay, so start typing. Yes, sir. And in between, if you have any doubt, you just raise your hand or feel free to ask me. सर वो कंस्ट्रक्टर और फंक्शंस वगैरह उसे पब्लिक करना पड़ेगा. हाँ, yes, correct. अच्छा, ऐसा कोई है क्या कि जिसे कंस्ट्रक्टर पता नहीं है? सर एक बार बता दो ना प्लीज. हाँ सर, एक बार ब्रश अप कर दो ना. अच्छा, और कितने लोग हैं ऐसे? यस सर, बता दो ना. यस सर, रिपीट करो. Yes, sir. ठीक है. और जिन्हें पता है, they can start with programming. So basically, suppose we have declared variable like this. Yeah, and all these are the private members, right? Yes, no. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Good. So now we want to initialize all these variables, and in order to do that, we have to write constructor. But constructor की कुछ properties है. First, it has to be declared in public section only. So first of all, public section. Second, it does not have any return type. So I will not write any void or anything. ठीक है? No return type. And its name is same as that of the class name. So class name जो है वही उस function का नाम होगा. Function. Opening bracket, closing bracket. Within that, how many variables are there? Member variables in this class? 3, 4. 4, right? So I have to assign 4 different values to these member variables. So first we will start with the name. The first is name. Name. अब name को value कैसे assign करते हैं? If it is a character array, ठीक है? So I cannot write like this. कोट में डालना पड़ेगा. फॉर लूप लावला. नाही, for बरोबर आहे. For loop पण लावता येईल. We can use for loop, but again it will take some more time. So instead of that, what we will do is we will use a inbuilt function string.h नाम की जो फाइल होती है, पता है सबको? String.h. Yes, sir. Yes sir. Good. Yes sir. So within that we have one function called as strcpy, string copy. ठीक है? तो string copy क्या करता है? You write a variable in which you want to copy. ठीक है? जहां पे copy करना है. So that means target. And then source, what you want to copy? Nil. So within double quotes, whatever you have written will be stored in this variable. If I write like this, what is the meaning of this? कोई बता सकता है? This means there is a one more variable nil whose name is nil, and whatever in that variable, whatever string is there in this variable, that has to be copied into name. For example, say I have a variable. First of all, strcpy देखते हैं. या पता है सबको strcpy? String copy. पता है. Yes, पता है. पता है. sir. Good. So I'll skip that part. And string copy nil. ये तो हो गया एक.
ठीक है. सेकंड इज अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर इज जस्ट इंटीजर. सो सर इसको लॉन्ग करना पड़ेगा. एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. अभी हमारा रिक्वायरमेंट उतना नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट कंसिडरिंग 3 to 4 और 3 to 5 ऑब्जेक्ट्स ओनली. सो इट्स फाइन. अदरवाइज whenever you are writing real time example तब आप यूज कर सकते हो. Count number is equal to 0. Similarly, balance and withdraw amount initially वो भी 0 होना चाहिए. So that's why you write separate is equals to 0 or you can directly write like this. Withdraw amount is equal to 0 semicolon, balance is equal to 0 semicolon या फिर ऐसे भी. तो ये हो गया which type of constructor? Default. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. And how do we call that? Suppose I have a main function. सर वो अपने आप कॉल हो जाता है सर. हाँ सर हमने क्लास लिख दिया तो फिर हो जाएगा. Yes, so it is automatically called. The one more property of constructor, we are not supposed to call that constructor. It gets executed, it gets called automatically, implicitly, whenever ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. Object is created. is created. हाँ. Let's create object. Object 1. सर बोला. सर इस असाइनमेंट में हमें एरे बनाना है सर या फिर सिर्फ एक ही कस्टमर का स्टोर करना है सब कुछ. फिलहाल तो हम एक ही कस्टमर का कर रहे हैं. ओके सर. So it's this one, object 1. So whenever you create object, this constructor will be called, and whatever there in object 1 ka name, account number, balance and withdraw amount, everything will be assigned to these values, whatever you have specified. Similarly, we have second type of constructor is पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. parameterized constructor. The difference is here you create n number of objects. obj1, obj2, obj3. If you create 3 objects, still all these objects, all these variables will have same values, nil, 0, 0. But suppose जब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं एंड आई नो द वैल्यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आई नो व्हाट इज द नेम ऑफ कस्टमर, आई नो हिज अकाउंट नंबर, आई नो हिज बैलेंस. इफ दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू मी, टू द डेवलपर, इन दैट केस वी कैन राइट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, नाम तो मुझे पता है. अरे तुम्हें करा डिस्कस काय करायचं